हाय, इस वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ओके, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूशन, पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना। सो इम्पोर्टेंस एंड मीनिंग देखिए, इन द फाइनल एनालिसिस द सक्सेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, द सक्सेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डेवलपमेंट कैन बी मेजर only in the relation to the implementation of the policy. Okay, the success of the administration can be measured only in the relation to the implementation of policy. How that administration will properly implement that policy, then only we will come to know the successness. Okay, एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा है हमें कब पता चलता है? जब वो अच्छे से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है. The implementation determine the extent to which the organization is able to carry out and achieve the stated objective. तो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है उसका ऑब्जेक्टिव ओके कैसे अचीव हो सकता है? बाय प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पॉलिसी. इट इन्वॉल्व डेवलपिंग एंड परस्यूइंग a strategy to ensure that policy process is completed within a minimum of delay and cost and problem. ओके, तो पॉलिसी जो प्रोसेस है वो क्या हो जाए, मतलब वो मिनिमम डिले के साथ, मिनिमम कॉस्ट के साथ, ओके, और बिना किसी प्रॉब्लम के साथ वो बने, पॉलिसी को बने, ओके, मतलब फॉर्मुलेट हो. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो देन द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर policy formulation it is come, that is the implementation, and it is the implementation involve the creation of the policy delivery system in which specific mechanism are designed and pursued in the hope of reaching particular end. तो जैसे पॉलिसी फॉर्मुलेट हो गई, देन इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हमें मेनली क्या करना पड़ता है? एक पॉलिसी डिलीवरी सिस्टम बनाना पड़ता है. ओके, तो उस पॉलिसी डिलीवरी सिस्टम क्या करती है? मेनली जो भी पॉलिसी का गोल है, ओके, वो गोल को अचीव करती है, ओके, पर्टिकुलर एंड को अचीव करती है. द पब्लिक पॉलिसी in the form of stated of the goal and objective are put into the action program that aim to realize the end stated in the policy. Okay, so therefore implementation process is very much important. So putting policy into effect, okay, effect involve not the end of policy making but a continuation of policy making by another means at a minimum implementation required. So what are they? What are their minimum, okay, requirement for implementation of the policy? So first one is the adequate person and the financial resources to implement the policy. Very much important. तो ये हमें कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी. तो हमें सबसे पहले तो एडेक्वेट पर्सनल चाहिए, मतलब ह्यूमन रिसोर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है in the implementation of the policy. Then financial resource, very much important. After that administrative capability, okay, to achieve the desired policy goal. So public administration के अंदर mainly the administration, okay, administration who is implementing that policy must be capable to implement that policy in an effective way. So when the administrative capability is good, okay, the administration is competence to do that, to implement that policy, then automatically the desired goal of that policy will be achieved. So third one is the support from the legislative, executive and judiciary wing of the government for successful implementation of the policy. तो उसके बाद जैसे हमें रिसोर्स की आवश्यकता होती है, उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसकी कैपेबिलिटी की आवश्यकता होती है. देन द नेक्स्ट दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द implementation, that is the support of the legislature, executive and judiciary wing, okay, for proper implementation of the policy. Now we will see the implementers. So public policies in India as in other countries are implemented by the complex system of administrative organizations and agencies. The main agency which implement government activity and public policy is the bureaucracy. So who are the implementers of the public policy? That is the bureaucracy. So this is an important institution which perform most of the day-to-day work of the government, and it is the bureaucracy which control the personal, money and other resources of the government. Okay, so bureaucracy play very much important role for controlling the personal. Okay, the personal means the employees who are working under him, and the money, okay,
money and the other resources. So the legal authority for their deploy, okay, he is the mainly the legal authority for the deployment of the policy. Since so much power and control over implementation is held by the bureaucracy, the legislature, the chief executive, judiciary set limit to the discretion and indirectly control the excessiveness if any. ठीक है, तो ये जो लेजिस्लेचर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये मेनली कंट्रोल करते हैं टू द ब्यूरोक्रेसी, okay, so that the bureaucracy will be in the limit. Though discretion and delegations are inevitable in the complex policy apparatus, specific strategy exists to exercise control over the bureaucracy operation if things go wrong. Okay, in the process, the legislature and judiciary tend to participate in the policy implementation. So likewise, the implementation is taken place. So implementers mainly the bureaucracy, and bureaucracy have lot of power, and that power also controlled by the other agencies, that is legislature, executive, chief executive and judiciary. Okay, then condition for successful implementation of the policies. So what are the conditions that are required for the proper implementation of the policy? Implementation is seen varying along continuum ranging from most successful to failure. Successful implementation involve many operations and procedures, as well as the time and resources are very much important for successful implementation of the policy. So Sabatier and Majmania identify 5 conditions for effective policy implementation. Okay, अगर हमें अच्छी पॉलिसी को अच्छी तरीके से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, देन वी must have these 5 conditions. So what are these 5 conditions? The first one is the program is based on the sound assumption relating to the changes, okay, in the target group behavior in the consonance with the program objective. तो जो पॉलिसी होगी मेनली वो ऐसी होनी चाहिए कि कुछ चेंज ला रही है, कुछ परिवर्तन ला रहा है. ओके, so that type policy is required. Okay, and that policy can be propagate through the programs. Okay, so the sound assumption related to the change in the target group must have into the policy. Then second one is the ambiguous policy directives and structure of the implementation process to enable target group to maximize their performance. Okay, then third one is the leader of the implementation agency possess substantial managerial and political skill that are committed to statutory goal. तो जो गोल है, ओके, जो लिखा गया गोल है उसको अचीव करने के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज है उनके पास मैनेजरियल पॉलिटिकल स्किल ये सभी होनी चाहिए. देन ओनली ही विल, ओके, he will definitely implement that policy. Okay, and before that the ambiguous policy directive होनी चाहिए without any, okay, error. Okay, that policy should be correct. Okay, with proper means सब कुछ सही होना चाहिए पॉलिसी डायरेक्टिव में, उसके पॉलिसी के स्ट्रक्चर में. ओके, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए. तो फर्स्ट वन इज द उस पॉलिसी का मतलब जो एम है वो चेंज होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद जो डायरेक्टिव होगी वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाली, ओके, या स्ट्रक्चर होगा वो क्या होना चाहिए, अनएम्बिग्यूस होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए. देन जो इम्प्लीमेंट कर रहा है उसके पास ये सभी स्किल होनी चाहिए, मैनेजरियल पॉलिटिकल स्किल होनी चाहिए. द प्रोग्राम इज एक्टिवली सपोर्टेड बाय ऑर्गेनाइज ग्रुप एंड बाय फ्यू की लेजिस्लेटर. ओके, थ्रू आउट द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस विद द जुडिशरी बीइंग न्यूट्रल एंड सपोर्टिव. ठीक है, तो जुडिशरी है वो न्यूट्रल रहनी चाहिए और सपोर्टिव रहनी. तो सपोर्ट, ओके, सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज ग्रुप is very important for implementation of the policy. Then relative priority of statutory objective is not significantly undermined over time by the emerge of the conflicting public policies or by changing in the relevant socio-economic condition. So policy must be rigid, okay, as per the objective. Okay, whatever the objective of the policy, that should be, okay, that should be strong. So relative priority of the statutory objective is not significantly undermined over the time. Okay, will not be significantly undermined of that policy, okay, by the emergence of the conflicting public policies. अगर पॉलिसी के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो मेनली, ओके, कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही है, देन ऑल्सो दैट पॉलिसी विल नॉट, ओके,
will not change his feature, the basic features. Okay, so that is the main features, okay, of the effective policy implementation. Okay, these all five are the main features for the, or we can say or the, we can say five conditions, okay, for effective policy implementation: 1 2 3 and 4 and 5. Okay, so policy making does not end once the decision is reached. The implementation of the decision is just as important as the policy itself. Okay, तो जितना important policy है उतना important उसका implementation है. So no policy formulators can be assume that decision will be automatically be implemented, ओके, एज इन वाइज. तो ऐसे नहीं सोच सकता है पॉलिसी को जो इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं पॉलिसी जैसे बनी गई है सेम दैट विल बी मीन्स ऑटोमेटिकली द पॉलिसी विल गेट implemented. Okay, that will not happen. So policy implementation require a wide variety of action. जैसे कि क्या क्या चाहिए इसमें: इश्यूइंग पॉलिसी डायरेक्टिव होनी चाहिए, एक पॉलिसी की डायरेक्टिव होनी चाहिए, एंड दैट आर क्लियर एंड कंसिस्टेंट होनी चाहिए. जो भी पॉलिसी की डायरेक्टिव होगी कि किस तरह से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसकी एक स्टेप बाय स्टेप डायरेक्टिव होगी. ओके, तो वो क्लियर होनी चाहिए. ओके, then creating organizational unit and assigning personnel with the information and authority necessary to administer the policy. ठीक है, जो भी पॉलिसी जो भी पॉलिसी को मतलब पॉलिसी को जो भी इम्प्लीमेंट कर रहे पर्सनल हो गए उनको सभी को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए उस पॉलिसी को एडमिनिस्टर करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए. देन कोऑर्डिनेटिंग पर्सनल रिसोर्स एंड एक्सपेंडिचर टू इंश्योर बेनिफिट टू द टारगेट ग्रुप. ओके, जिसके लिए पॉलिसी बनाई गई है. ओके, सो दैट रिसोर्सेज एक्सपेंडिचर, ओके, वो सभी क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेट पर्सनल रिसोर्स एंड एक्सपेंडिचर टू इंश्योर बेनिफिट to the target group. Okay, so this is very much important. Then evaluating implemental action of the personnel. Okay, at last evaluation. Okay, implementation action जो भी लिया गया है by the पर्सनल द्वारा लिया गया जो भी implementation action है for the policy that should be evaluated. Likewise, okay, we can implement the policy. So none of this step is easy. The implementation of the policy thus involve not the end of the policy making but the continuation of policy making by the other means. Okay, so this is mainly the implementation of the policy that we have discussed now. Okay, in the next video we will understand the policy making process in India. Okay, so that's all for this video. Thank you, bye bye.